Assalamu alaikum guys, this is me Minhal Siddiqui and welcome to our first ever episode of our interview sessions where we interview different freelancing experts and ask them about their expertise niche. So today we have the marketing guy Huzaifah, the digital marketer expert Huzaifah. Walaikum Assalam. How are you doing? I'm great, how are All you? good. Heavy scenes going on. Chale, that's great. So Huzaifah, can you tell us about your career and basically how did you got involved freelancing? Okay, that's fine. When I was in eighth grade, I just got to know about freelancing and digital marketing, and then I taught my father, and my father connected with his cousin. He was working with Tissot, which is the brand of watches actually, and Wondershare Filmora as an SEO guy. He taught me SEO, and after that, I got into freelancing, digital marketing, and SEO. And currently, I'm running a US-based marketing agency, and I'm running over 250 plus blogs, in which 30 of them are featured on CNN, Inva Times, and BBC. Along with that, I'm a small YouTuber as well. So yeah, pretty much it. Okay, that's great. So basically, from the starting of your career, you had a backbone, like a support system with you, right? Yes, Or am Alhamdulillah. I wrong? Okay, Alhamdulillah, that's good. So what was something that like grabbed your attention? Have you ever tried exploring another skill except digital marketing? Like, yeah, आपको digital marketing या आपने explore किया and just grab your attention and you were like, this is the thing for me. No, actually, when I was in seventh grade, I got to know about Java and Android Studio. And I actually started uploading the tutorials on my YouTube channel as well when I was in seventh grade. Okay, how can you Oh, develop a web view app in Android Studio? I was interested in coding, but after some time I was like, nah, it's like very boring. So that's why I was like into something. Then I started my own blog, and after that, when my father told about that blog to his cousin, he said he should be into blogging and SEO and all that stuff. And I was like, okay, yeah, damn sure, why not? And I found SEO, fell in love with SEO actually. okay. तो मतलब like बचपन से वो एक passion था, वो एक interest था, right? You could say. That's great. Like starting from such an early age and from such an early class, that's actually great. Or आपके पास backup support भी था, mashallah. That's great as well. So like, what was thing which inspired you to do blogging? या मतलब ऐसी क्या चीज आप explore करे थे which like at seventh grade you explored about blogging? Like there might be something that like evoke that spark in you, right? Exactly, at that time I just got my new mobile phone, and I got a new laptop from my father, my father said and I was like, okay, that's fine. And I started exploring YouTube, and over there I found Hisham Service channel. And at the time there was a YouTuber, I just forget his name. He was a Indian YouTuber, and he used to make stuff about blogging, and I started watching his videos. I got my blog approved from Google AdSense, and I was like, yeah, that's so fun, and I should be into all that stuff. And yes, this is what happened. मतलब seventh grade is the time I think कि जब सारे students को या like people teenagers get their first mobile and their first laptop, and it's like pretty amazing to see that you use that for the positive vibes out there and like to use it for the positive way rather than using it in a negative way. So it's great I seeing guess that कि I did you? I guess it totally depends on the environment, because जिस school में हम लोग गए थे, because एक school का environment भी change हुआ था. And at that time I was studying Oxford, and Oxford में they taught me कि in seventh grade they taught us कि how you can develop a calculator, a real working calculator from Visual Basic through coding. From that I got interested into coding, and after that blogging, and after that I started from HTML, by the way, and then all that stuff. Period. ठीक है. I And guess can you tell us where like I'm sorry to interrupt, like where do you belong from? then I was it totally depends on the environment, I guess, कि किस Mm-hmm. environment में बंदा हो तो उस हिसाब से फिर आगे सीन होता है. चले that's great. I think you had a good environment with you and yes, company really matters. वही बात है. अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छे लोगों के साथ आपकी environment है, company है होती है आपकी, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो. Huzaifah, where like which state do you belong from? I'm from Lahore.
Okay, you're from Lahore. That's great. And have you always stayed in Lahore, or have you gone abroad and something like that? Um, we have been to Quetta, and after that, like in 2008, we shifted to Lahore. And after like in Lahore, then we again shifted to Quetta in Okay. 2015 and 16, and then we again came back to Lahore as like permanent. So you had like a pretty मतलब इधर से उधर वाली life Exactly, as well. shifting stuff. Yeah, I know that feeling because I used to be in Lahore and then I shifted to Saudi and then I came back to over here. So yeah, it is a lot of stuff. yeah, Khair, exactly. yeah, what is the main reason you chose digital marketing for yourself? Or what was the thing कि आपने इस point पे आके decide कर लिया? Because मुझे पता है आपने एक बहुत early age पे 7th grade पे और 11th year की age पे जैसे आपने कहा आपने start कर दिया. So what was something or what was the point in your life आपने सोचा कि हाँ बस digital marketing ही मेरी चीज है, इसके अलावा मुझे ना कुछ करना है, ना मैंने अपना किसी चीज में career बनाना है, बस this is my thing. सीन कुछ यूं है कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया आई वाज इंटरेस्टेड इन जावा एंड ऐप डेवलपमेंट. उसके बाद फिर आई गॉट इंटरेस्ट इन वेबसाइट डेवलपमेंट थ्रू HTML5. लेकिन वो एक चीज होती है ना कि आई सॉ लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड HTML5 एज वेल, एंड दे आर लाइक वर्किंग एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर एज वेल. So I was like, यार मुझे कौन सी ऐसी फील्ड चूज करनी है. I started exploring different kind of fields. I explored graphical designing as well, एंड उसके ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की. एक दो ऑर्डर्स भी आए, लाइक हर फील्ड के अंदर कुछ नई कोशिश की. बट व्हेन आई फाउंड डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO, द मेन थिंग SEO, आई स्टार्टेड फ्रॉम SEO. Right now I am a digital marketer and running a marketing agency, but I started back with SEO. So I found SEO really interesting. And I was like, if I am going to spend 18 to 20 hours, I like practically spent 18 hours while sitting on the chair. And I was like, no, it doesn't matter for me. So that's why I choose that skill. And सारे शाम से कहते हैं अगर ऐसी स्किल चूज करनी चाहिए बंदे को कि अगर वो स्किल जो है ना बंदे को ख्वाबों में आए. So it happened with me. चले at an like such an early age again आपने अपना career choose कर लिया. So in the future, do you see yourself changing your skill or no? देखिए, like I see myself, I won't be changing my skills, but I would be exploring different kind of skills because I love to explore different kind of skill set or whatever the new things going on. I would be exploring about blockchain and Amazon and all this stuff, but I won't be changing my passion or career because passion एक चीज का होता है. Obviously, or this is something I tell everyone out there या जो भी freelancer मुझे approach करते हैं कि always explore every skill. There is no limit in exploring. आप Exactly. एक्सप्लोर हर चीज को करना चाहिए, लेकिन पैशन एक चीज को बनाना चाहिए. द थिंग इज दैट एक वक्त में बंदा सिर्फ एक कश्ती के ऊपर सवार हो सकता है. जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन. ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन. क्यों? क्योंकि एक वक्त में बंदा सिर्फ एक कश्ती के ऊपर बैलेंस होकर सवार हो सकता है. इफ ही वुड ट्राई टू गो फॉर 2 और 3, वुड बैलेंस होकर गिर जाएगा. ऑब्वियस बात है. या तो exactly. डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. एग्जैक्टली वही बात है. आप सीखो हर चीज के बारे में, लेकिन हमेशा याद रखो आप एक्सपर्ट किसी एक चीज के बन सकते हो. मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आई विल से दिस ओवर हियर एज वेल. जो डॉक्टर के इवन होते हैं मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं. कोई आपको बोन डॉक्टर मिलता है, कोई आपको डिफरेंट मतलब चाइल्ड डॉक्टर मिलता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट मिलता है. लेकिन उनकी जो स्पेशल एक्सपर्टीज होती है ना, वो एक ही चीज की होती है. पढ़ते तो वो सब कुछ है, लर्न वो लोग सब कुछ करते हैं, उनको नॉलेज सब चीज के बारे में होती है, लेकिन वो लोग एक्सपर्ट किस चीज के होते हैं? सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के. तो मैं एग्जैक्टली. इसलिए फ्रीलांसर्स को भी यही बोलती हूँ कि आप लोग भी इससे लर्न करें और एक चीज के एक्सपर्ट बने. So, okay, this is a random question over here. Lekin, what was that first purchase of yours which like made you really, really proud? My first purchase was the domain name and hosting of my first blog. Okay, And that's great. I made like I made some savings from my ED, and after that I invested my ED into domain name and hosting. And I was like, oh my god. That And you want within 5 months उससे double okay from AdSense heavy scene हो गया हुआ था. चलो दैट्स ग्रेट. क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ लोगों से, तो वो लोग उनका आंसर आ रहा होता है मोबाइल या लैपटॉप या लाइक समटाइम्स अगर वो लोग मैं बहुत बड़े उसके हो बाद गए उसके लाइक कार्ड. बाद तो purchases like all this setup, Mac and everything was just from Freelancer. लेकिन the first purchase No.
was like from my ED, and after that, from freelancing, there are a lot of stuff I'm proud of. Okay, I invested in all that stuff. That's great. And can you talk about your first salary over here? Like, what was the excitement level and what was that feeling of getting your first salary? Okay, मुझे exact dates भी याद है, client का name भी याद है, when I got my first Oh, client, and उसका नाम भी याद है, each and everything. And it was like I got that client from a Facebook group, and he was great guy, best बंदा था. He was my first client, but you know the experience was horrible, I guess. उसके बाद से पाकिस्तानी clients के साथ बहुत कम काम किया मैंने, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने चेंज कर दिया था, अपनी डेस्टिनेशन नहीं चेंज कर दी. स्टार्ट आई वाज लाइक स्टार्टेड वर्किंग विद पाकिस्तानीज. आफ्टर दैट द इंसिडेंट हैपेंड. इट स्टार्टेड लाइक इन 14, लाइक उसने जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ साइन किया था, इट वाज लाइक 14th November, एंड उसके बाद it was about to end in 14th December, 1 month. And I was like, okay, I paid him for $500, and he was like, no, we can't pay that much. I said $250. No, 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 I can't. मैंने कहा, for the first month I'm gonna give you a trial of SEO for $100. And he was like, yeah, damn sure, go for it. And I started working on his SEO, and I was like 50% advance. Kindly send that 50% was like, I'm gonna send you soon. And a month passed, 1.5 month passed. 16,000 टोटल थे, उसने 10,000 पे किया थे 29 को. सो अच्छा, अब मेरे पास ना लाइक वो जो 10,000 आए थे, इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि लाइक oh my god, I like just made 10,000 पाकिस्तानी रुपीस. एंड आई वाज लाइक ओ यस. पहले तो मैंने लाइक सबसे पहले अपने दोस्तों यारों को बताया, भाई भाई आपका कमाने वाला बंदा बन गया यार. तो अच्छा, उस वक्त 10,000 वाज लाइक क्या बात है यार. अच्छा, मैं घर में सबको बता रहा हूँ. अच्छा, जैस कैश में आ गए, एंड आई वाज लाइक, मैंने सबसे पहले जाके दादा दादों को शो कराया, एंड वाज लाइक नो, हाथ में आएंगे तब हम यकीन करेंगे. आई वाज लाइक ओके, ठग गया भाई साहब निकलवाने. एंड आई वाज लाइक यस, 10,000 10,000. अगले दिन मैं अपने छोटे भाई को ले गया, दोनों छोटे भाइयों को ले गया, एंड मैंने कहा, भाई साहब जो तुम लोगों ने आज लेना है ना मेरी तरफ से. एंड दे वर लाइक, पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने उठाई, एंड लाइक पेड फॉर दैट. एंड उसके बाद फिर मैंने उनको खाना वाना खिलाया, एंड फिर घर वालों के लिए थोड़ा बहुत चीजें भी लेके आया. एंड आफ्टर दैट बस वो खत्म भी हो गए, 10,000 एक दिन के अंदर अंदर, पता भी नहीं लगा. एंड आफ्टर दैट आई वाज लाइक, यार अब तो कोई और काम पकड़ना पड़ेगा, ये बंदा तो गया. लेकिन फिर उसने लाइक 5th Jan को बाकी ये 5,000 भेजे, 1,000 अभी भी पेंडिंग है. लेकिन फिर मैंने बोला, उसने बोला मैं बस 1,000 नहीं भेज सकता. मैंने कहा ओके, नो वरीज. So that's why after that, like I started working with foreign clients. okay. So like मतलब उस वक्त उस 10,000 की वैल्यू आपके लिए इतनी ज्यादा थी. I probably think अब उस 10,000 की वैल्यू इतनी नहीं होगी, लेकिन at that time that 10,000 might be like the biggest thing for you, or you were like, yeah, this is crazy. It Because was I know like finance. वो 10,000 जिसके अंदर पता नहीं कितने ज्यादा सो होंगे, और वो मैंने खुद I just earned them. क्या बात है. और अब 30,000 की भी 30,000 भी आ जाए, आपको 1 लाख तक भी आ जाए, इट्स नॉट द सेम जो वो वहां पे 10,000 की फीलिंग होती है, कसम से. दैट इज सो ट्रू. You know difference आ जाता है, like तब 10,000 was a big thing, और अब अगर आगे देखा जाए तो Okay, that's good. So like you already told me you always had the support of your families and the support of your friends. So have you ever like मतलब आपने किसी अपने दोस्त को inspire किया हो towards this freelancing field, या ऐसा नहीं अच्छा, हुआ? तो उस दोस्त का नाम नहीं मेंशन करूँ, क्या पता वो भी देख रहा हो यहाँ पे, एंड अगर वो देख रहा है तो अच्छा, उसकी वजह से लाइक काफी अच्छे सीन भी हुए थे, काफी ऑफ सीन भी हुए थे. अच्छा, अब उसका क्या सीन हुआ था ब्रो, मैं गीबत नहीं कर रहा क्योंकि आप देख रहे हो इस वक्त. तो सीन ये है कि जब उसको पता लगा कि आई एम मेकिंग समथिंग, मैं अच्छा, ही वाज गुड इन राइटिंग, ठीक है. एंड अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा था, so there was an e-commerce store, एंड उनको चाहिए था एक कंटेंट राइटर. तो मैंने कहा किसी और को हायर करने से बेटर है अपने किसी दोस्त यार को बता देता हूँ. मैंने अपने दोस्त को बता दिया, नहीं वाज लाइक ओके कर लेते हैं, लेकिन फिर आगे कॉलेज स्टडीज वगैरह. तो मैंने कहा ठीक है. अब भाई साहब उसने बोला बस
मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है। मैंने बोला ठीक है, ये पहला काम पकड़ो, आपने इसके ऊपर करना है। एंड वी डिड इट फॉर लाइक 3 to 4 months। एंड उसका कंटेंट ऐसा होता था कि जो मेरा क्लाइंट था, it was like क्या बात है। और अगर किसी दिन वो नहीं लिखता था ना सही तरह, तो वो बोलता था ये आपने नहीं लिखा, ये किसी और से आपने आउटसोर्स करवाया। लेकिन लिखा उसी ने, जान छोड़ रही होती थी। लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट लिखता था, उसकी वजह से वो जो कंटेंट था दैट वाज ट्रेंडिंग इन गूगल। ठीक, क्रेडिट जाता है सिर्फ उस बंदे को, बड़ा अच्छा कंटेंट लिखा। लेकिन फिर पेपर्स आ गए, उसने बोला बाय और मैं फिर अटका रह गया उस Okay. क्लाइंट। क्लाइंट वाज लाइक क्या भाई, कंटेंट किधर है यार। मैंने बोला वो तो छोड़ गया, फिर मैंने किसी और को हायर किया। लेकिन ब्रो इफ यू आर वाचिंग दैट, आपने बहुत बुरा किया था मेरे साथ दरमियान में छोड़ के। That actually happens. मतलब बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली यंग फ्रीलांसर्स होते हैं, वो लोग हमेशा हमेशा पेपर्स में या जब उनके पास स्टडी लोड आता है वो ब्रेक ले लेते हैं। सो फ्रॉम दिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जब आपके पेपर्स होते हैं या अभी आपके पेपर्स चल रहे थे, डू यू टेक अ ब्रेक और नो? नहीं, मैंने को ब्रेक तो नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सपोर्ट है। दे लाइक जस्ट एवरेज रह के, आपने सिर्फ पढ़ के पास करना है, एवरेज रह के। कोई लाइक नंबर गेम है ही नहीं, नो नंबर्स एट ऑल। जितने मर्जी नंबर आ जाए तो हैवी सीन है। तो आई वाज लाइक ओके यार, क्योंकि देखिए मास्टर के लिए ना डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर बंदा थोड़ा बहुत पढ़ के साथ साथ करके कर ले, मैनेज कर ले, टाइम मैनेजमेंट अगर आ जाए, वैसे ही है। I was actually coming on the point कि do you support degree or not, and you already answered that कि no matter what you need degree guys। ऐसा नहीं है कि आप कमाने लग जाओ तो आप डिग्री को बिल्कुल ही साइड पे रख दो। Degree always adds value to your skill, to your career. It never degrades or drops the value of your skill itself. एग्जैक्टली This अब is वो बात अलग है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लेकिन डिग्री obviously इज इम्पोर्टेंट। जो मर्जी कर ले बंदा, बस किसी तरह करके डिग्री हाथ में आ जाए, बेस्ट थिंग है। क्योंकि अब देखिए ना, किसी रीजन की वजह से कोई बंदा फ्रीलांसिंग में आगे परफॉर्म नहीं कर पाता, तो अब उसके पास तो कोई बैकअप नहीं होगा। बैकअप वाला सीन, डिग्री इज बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने कहीं बाहर भी जाना है ना अपने काम को लेके, तो फॉर दैट यू नीड अ डिग्री, अ प्रोफेशनल डिग्री। So that's why I'm like continuing my education as well. Heavy scenes. that's great. And can you break us your age? Oh, like I just turned 17 back in March, this March. Really? Okay, Yeah. I did not know. I did not know that as well. So, mashallah, at the age of 17, you have your own agency as well. So, what inspired you to start your own agency? I was like, जब मैं 15 साल का था, तो एट द टाइम मेरे पास इतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वर्कलोड आ गया हुआ था कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा था। ठीक है। और एट द टाइम क्लाइंट ऐसे गैरत हो गए हुए थे कि दे वर लाइक यू हैव टू सिट विद अस कंटिन्यूअसली। तो मैंने कहा हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि एट द एज ऑफ 15 मेरा ब्लड प्रेशर चला गया था 150 160 के ऊपर। एंड माय फादर वाज लाइक शट डाउन ऑल दैट स्टफ। अच्छा, उस वक्त थोड़ी मेरी हैबिट्स भी खराब थी, पूरा मेरा टेबल यहाँ पे भरा होता था चॉकलेट्स वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। लाइक नो नो नो, ये गलत चीजें। फिर हेल्थ भी डैमेज हो रही थी, फिर इस वजह से मैंने कहा अब जितनी फ्रीलांसिंग थी वो साइड पे रखते हैं, नाउ वी शुड गो फॉर एजेंसी। मैंने टीम बिल्ड की अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कैनेडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, ये सी। चलिए, that's great. And one thing which I have experienced myself as well कि कुछ कभी कभार आपकी टीम सिलेक्शन में आप obviously हमेशा आपका लक काम नहीं करता, आप गलत लोगों को भी सेलेक्ट कर लेते हो who bring your agency down, who bring your quality of the work down. So have you experienced that, or have you experienced any like type of betrayal, I would say, from any of your team members? काफी दफा लाइक उनकी वजह से काफी क्लाइंट्स भी बाईपास हुए, लेकिन आफ्टर दैट आई जस्ट स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शन विद क्लाइंट्स इस लेवल पे कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, सोने लगा हूँ, खाना खाने लगा हूँ, दे वुड बी आस्किंग फॉर मी एंड आई वुड बी आस्किंग फॉर देम। अब जब इस लेवल का कनेक्शन हो जाता था, तो अगर कोई बंदा बाईपास करने की कोशिश करता था, सो दे वुड बी रिपोर्टिंग मी कि यार ये सीन है। I was like no worries, पार्ट ऑफ लाइफ होता है, चिल सीन। क्योंकि अभी खुद देखिए ना, अभी एक बंदा है जिसको आप पे कर रहे हो 30 to 40,000। अब जब वो देखता है कि क्लाइंट है, ही इज पेइंग हिम $800 to $900 अ मंथ, तो उसकी तो पूरी 3-4 महीनों की सैलरी एक साथ निकल आएगी। सो व्हाई वोंट ही बाईपास दैट? Obviously, that's true. Yes. So, like, something I wanted to talk about is who is right now at the moment, except Hisham Server, who is like one of your best mentors or like favorite mentors?
Okay, like in my point of view, mentor वो है जिनसे आपने like कुछ सीखा हो, and मैं like हर एक से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है? तो I feel like everybody in these field जो भी कुछ नया सिखा रहे हैं, they are my mentor, ठीक है? और सबसे बढ़ के सॉरी शाम सर, एंड उनके साथ साथ जिन्होंने मुझे SEO एंड डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सिखाई, who's like my father's cousin, तैयब भाई, who's like my mentor as well. So MashAllah. ये सी है. That's great. So this is like most of the people out there start freelancing because of like उनकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल इशू होता है या they want to financially support their parents. So was that the case in like with you, or you just wanted to do it for your own self or your passion? No, 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 no. Alhamdulillah, alhamdulillah, we are like, alhamdulillah, each and everything is fine and heavy scenes going on. You know, like मेरा interest खुद ही से बन गया हुआ था when I was in 7th grade. और you know, मैंने आपको बताया ना, it totally depends on the environment. और जब पैसे आना स्टार्ट होते हैं, बंदा इज लाइक क्या बात है, पैसे आ रहे हैं तो मजे भी होने चाहिए. तो आई जस्ट लाइक डिड ऑल दैट स्टफ, फ्रीलांसिंग फॉर द सेक ऑफ माय फन, ठीक है? एंड मुझे नहीं पता था कि आई विल बी लाइक रनिंग अ मार्केटिंग एजेंसी एंड ऑल दैट स्टफ, बट यू नो टाइम के साथ साथ खुद ही हैवी सीन हो गया. See, ठीक है, that's good. What is one advice you would give like more people coming into freelancing field, especially in digital marketing field? सो लाइक फॉर दोस जो डिजिटल मार्केटिंग हो गया या कोई भी निश है ना, फ्रीलांसिंग उसके अंदर आ रहे हैं, एक बेसिक एडवाइस जो मैंने इसमें इंटरव्यू में बात की कि एक वक्त में बंदा एक कश्ती पर सवार हो सकता है. जस्ट चूज अ सिंगल स्किल एंड गो फॉर इट. अब वो स्किल कैसे चूज करनी है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे से को पूछता है ना कि स्किल कैसे चूज करनी है, हम लाइक भाई आप 5 से 6 स्किल्स पकड़ो, उनकी बेसिक नॉलेज लो. अब जब आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाएगी, 1.5 हफ्ता आपने उसकी बेसिक्स को स्टडी किया वो है क्या, अब आप एनालाइज कर लोगे यार देखो हर कोई SEO के लिए, हर कोई ग्राफिकल डिजाइनिंग के लिए तो होता नहीं, हर कोई अमेजोन के लिए नहीं होता. अब जब आप उनकी बेसिक नॉलेज ले लोगे, यू वुड गेट टू नो कि यार आप इनमें से किस चीज के लिए बने हो या कौन सी स्किल आपके लिए बनी है. अब जब आप उनमें से एक स्किल को चूज करोगे और फिर उसके अंदर डेली बेसिस पे अपने नॉलेज को नरिश करोगे, तो यू वुड बी अ बला इन दैट नीश. तो दिस इज व्हाट इट इज. What was, if I could ask, what was like the first ever freelancing platform you used for yourself? फाइवर, डेफिनेटली फाइवर. फाइवर हम सब की दिल की जान होती थी और अब नहीं है. अब तो दिल टूट्स फ्रॉम फाइवर due to some Yeah. reasons. लेकिन अब alhamdulillah I'm getting clients from Instagram, direct clients from Instagram. I'm pitching brands on Instagram. Started from chota brands, but right now dealing with 5 e-commerce stores based in US as an SEO guy. MashAllah. And उसमें से That's 4 great. जो हैं they are from Instagram. And I still like keep telling this to people: optimize your social medias, optimize your social medias. Like, people are not listening. You can see he has gotten so many clients off social media, and there are people still not believing in the power of social media, And which you is know, sad. Like, I just saw like some of your stories as well. Just like you were telling people go for LinkedIn, and you won't believe LinkedIn is the most powerful social media platform nowadays and for the future as well. और वहां से जो लीड जनरेशन होती है, क्योंकि वहां पे सारी कंपनीज के CEOs और फाउंडर्स बैठे हुए हैं, HR डिपार्टमेंट पूरा बैठा हुआ है. तो दैट्स व्हाई लिंक्डइन इज किंग, सुपरमेसी ऑफ लिंक्डइन. yes, exactly. और LinkedIn अभी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यार, ये बहुत पहले से आया हुआ है. यहाँ पे बहुत पहले से सारे CEOs, HRs, managers सब बैठे हुए. So getting a client of LinkedIn is, it depends on you, on your content, on your communication skills. ये पूरा आप पे dependent है. It does not depends on anything. मतलब आपका, अगर आपकी expertise है, आपकी specialty है और आपका प्रोफाइल optimized है, you'll get a client in no time. वहाँ पे इतने लोग बैठे हुए, लेकिन people unfortunately don't know about that, especially people from Pakistan. So that's sad. लेकिन slowly but gradually people are switching to social medias, so that is great seeing. Great बट उसमें influencers भी like ना, you as well. जी. एग्जैक्टली पता है, उसमें भी ग्रूमिंग की जरूरत है पाकिस्तानी ऑडियंस की, बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है ऑन लिंक्डइन एज वेल. सो या इट्स द Obviously. फैक्ट कि लिंक्डइन काफी पहले से है मार्केट में, किंग है.
He's the king. LinkedIn, damn heavy scene. So have you ever like got a very high paying client from LinkedIn No, yourself? haven't tried for LinkedIn. I Have you just optimized your LinkedIn? I have a profile on LinkedIn, ठीक है, सही optimized भी है, but कभी एक्टिव नहीं रहा मैं LinkedIn के ऊपर खास, because like I'm on to बहुत सारा काम भी और टाइम भी, और like Instagram के ऊपर बहुत ज्यादा डीलिंग होती है क्लाइंट्स के साथ, तो I never went for it, but I have plans in the future. जब चल तक नींद इंशाल्लाह, नहीं होगी that's तब तक great. हम उस तरफ नहीं जाएंगे. चल इंशाल्लाह, that's great. अच्छा, एक और चीज that like a lot of young freelancers might feel this, लेकिन कभी आपकी एज प्रॉब्लम बनी है फ्रीलांसिंग फील्ड में? कभी भी? बनी थी in the start when I was 14. One of my Gora clients said, "Okay, you are a kid and we can't handle our business side to you to like आप उसके ऊपर हाथ साफ करो, हम आपको अपनी साइड क्यों दें?" And I was like, क्या बात है भाई. And उसके बाद से like अभी मैंने अपनी पर्सनालिटी से रूम किया, just इतने बड़े बड़े बाल रखे and beard, just because कहीं मैं अभी जाता हूँ ना, they are like, no, you are 24 or 20 years old guy and you are like not 16 or 17. That's why I did all that. Okay. सही है. So like you probably have to hide your identity, I guess, to act like you're not Not that 17. much, लेकिन पता है फाइवर के ऊपर भी मेरे इसी वजह से अकाउंट सस्पेंड हुए थे ड्यू टू आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपना नाम डाला हुआ था, बट आई वेरीफाइड फ्रॉम माय फादर्स एनआईसी एंड ऑल दैट. उसके बाद आईडी 90 डेज के बाद उन्होंने बस That, पेमेंट रिलीज की. हाँ. नो, चले 1 साल है, फिर you'll be 18, there will be no problem. इंशाल्लाह. Inshallah. So yes. Okay, so what inspired you to start your own YouTube? मतलब already freelancing भी और agency भी है, और फिर YouTube के ऊपर भी you want to start your own I career. So started, what was the to be reason behind honest, that? like I started from YouTube, not from freelancing or anything else. I started from YouTube. Oh, okay. मैंने अपनी YouTube के Okay. ऊपर जो सबसे पहली वीडियो अपलोड की थी, that was कि आप अपने प्लेजराइज्ड कंटेंट को, इसके अंदर जितना भी कॉर्पोरेट कंटेंट है उसको किस तरह खत्म कर सकते हो. I just told a trick. अभी वो वीडियो प्राइवेट पड़ी है, लेकिन इन फ्यूचर मैं वीडियो रिवील करूंगा अपनी ऑडियंस के लिए. लेकिन that was my first video. After that I uploaded videos about how can you develop an app on Android Studio. वो अभी भी चैनल के ऊपर शायद पड़ी होंगी, वो अभी तक प्राइवेट नहीं हुई. Okay. And what was the response on YouTube? Damn, zero response. It was like I Okay. got 100 subscribers. After a long time, जब 100 सब्सक्राइबर हुए थे तब I was like 13 and a half or like 14 का होने वाला था मैं. And I was, हाँ यही सीन था. और वो तकरीबन सारे फैमिली वाले थे. एक घर में फंक्शन था, शादी शादी हो रही थी, एंड मैंने हर एक का मोबाइल खोल खोल के सब्सक्राइब करवाया था. Okay. Okay, that's great. So Then like, मेरा एक कजन था, उसने एक आइडिया दिया, बोलता है तुम एक काम करो, जब शादी हॉल के बाहर पहुंचो ना, तुम वहां पे एक कार्ड के ऊपर अपने यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड बनवा के यहाँ पे करो, जो भी एंटर हो उसको बोलो पहले स्कैन करे फिर अंदर जाए. great idea. बहुत बेहतरीन आइडिया, करना चाहिए आपको. So But like, what was your Mhm. what was your journey from like 100 subscribers to now 1K? Now I'm like about to hit 2K इंशाल्लाह. Mhm. लेकिन पता है यूट्यूब के ऊपर मैं कभी भी इतना एक्टिव नहीं रहा. Mhm. ये सारा सेटअप जो है इट्स लाइक माय शौक. बाकी यूट्यूब के ऊपर मैं कभी भी को खास इतना एक्टिव नहीं रहा. लाइक एक एक महीने के बाद एक वीडियो अपलोड होती है. तो ये सीन Yeah. है. Yeah. क्योंकि साथ ये डिजिटल मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग एजेंसी टीम हो गया, और साथ स्टडीज भी, उसके साथ साथ यूट्यूब. Obviously, you're not gonna handle this much. So like, something common in teenager boys is कि वो लोग गेमिंग में बहुत इन्वॉल्व होते हैं, like PUBG, Fortnite हो गई, FIFA हो गई. So ever gotten your interest towards that side, या addicted to a game? को खास एडिक्टेड नहीं होता, बट लाइक व्हेन जब छोटे होते थे तब नया पीसी मिला था, तब तो थे एडिक्टेड. GTA San Andreas, GTA Vice City एंड ऑल दैट ऑल द टाइम.
वी वर लाइक, जब मुझे इस काम का नहीं पता था तब यही खेलना था. एंड इवन स्टिल अभी जब मैंने नया गेमिंग सिस्टम बनवाया था, तो अभी अभी की बात है, लाइक इट्स लाइक 2-2.5 महीने पुरानी बात है कि एक गेम है रेड डेड रिडेम्पशन 2. आई गॉट एडिक्टेड टू इट एंड यू वोंट बिलीव विद इन 2 वीक्स मैंने पूरी गेम एंड की. तो ये भी सीन होता है. और ओके. फिर वो लेकिन लेकिन टाइम मैनेजमेंट उसमें भी टॉप के ऊपर थी. ठीक है, जब क्लाइंट से सारे मीटिंग से फारिग होता था उसके बाद बैठता था सुबह फजर के बाद, और 10 बजे तक सुबह खेलता रहता था वो गेम डेली. Daily, okay. Uh-huh. So right now, who are like your top favorite digital marketing YouTubers या mentors? डैम, फॉर डिजिटल मार्केटिंग अगर मैं गोरो को देखूँ ना, डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के, लाइक डिजिटल मार्केटिंग तो नील पटेल भी काफी अच्छी कवर करता है, लेकिन मैं नील पटेल को फास्ट फॉलो नहीं करता, बट ही इज अ गुड गाय. ठीक है, और वंस आई वाज अ फैन ऑफ हिम, लेकिन फिर बाद में छोड़ दिया. आफ्टर दैट लाइक फॉर एसईओ से रिलेटेड अगर मैं किसी को सही फॉलो करता हूँ, दैट इज ब्रेंड डीन. वो एसईओ से रिलेटेड बहुत काफी अच्छी टिप्स देता है. अगर आप पाकिस्तान में देखें, तो अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से देखें तो इस्माइल ब्लॉगर भाई, किंग इस्माइल भाई. और डिजिटल मार्केटिंग सर शाम सवर कवर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को भी अपने चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली सर शाम सवर. So, do you think Hisham Server's videos are enough for coming into the digital marketing field? am a big yes, क्योंकि if you attend the live lectures like जो every year जो host करते हैं cohorts वगैरह, उसके अंदर वो basically target digital marketing और different kind of niches को कर रहे होते हैं. लेकिन if you go and sit there in the live lectures of Sir Sham Savar cohort 4, बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज हुई, cohort 5 अभी still going on. अगर आप बैठेंगे ना, you would get to know basic to advanced level knowledge, what I noticed. ठीक है, तो यार damn sure, I'm damn sure about this thing. Chale, that's great. And coming towards the end of our interview, what is the biggest achievement you have gotten till now in your whole freelancing career? Like there are a lot of achievements, like in there was a client, ठीक है, still going on. You know, his website started like a year ago. You could say in 2020 December, and I started working on their website on 5th June 2021 as an SEO guy. I remember the dates as well. And when I started working on their site was getting around $100-200 sales per month. First month was like $250. The second month was like $250 to $300. Third one was like $500. Fifth month was like $1,000, like $900 a month. And after that, all of a sudden, I guess fifth month was going on, and it was the end of like fifth month, and the sixth month was about to start. Their sales were above $5,000. I was like, no way. And after that, you won't believe the last year, December, sales were $11,000. $1,000 were in return because they weren't able to deliver on the same date of Christmas. But the thing is that their 3 pages were in trending section of Google, and they were getting a lot of traffic. They got $10,000 plus sales, in which like $1,000 were in return. So I guess for SEO वाला scene, this is still now so far my biggest achievement, you could say, जो client के साथ किया हो. अगर blogging वाले scene में देखें, so like 26 blogs are featured on CNN, NV Times, and BBC. So for that, it's like best thing for me. That's great. So, मतलब in like at the age of 17, you're doing all this. मतलब आपकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, माशाल्लाह माशाल्लाह से. So, मतलब आप में कभी वो एक फीलिंग नहीं आई कि आई एम सच अ बिग पर्सन, या लाइक एक होता है ना लोगों में कभी कभार गुरूर आ जाता है, but you still That seem to be never. like such a down to earth person, and मतलब कोई वैसा सीन नहीं है. Like यहाँ पे ये एग्जांपल बहुत दफा मैंने कोट की है. इवन माय फादर इज लाइक, ये एग्जांपल अब बहुत किस चुकी है. यू आर नॉट सपोज्ड टू कोट दिस एग्जांपल, बट इट इज अ फैक्ट. व्हाट आई थिंक is I'm just going to quote that example. So जिन्होंने सुनी हुई है, you have to bear with that. ठीक है, अब अगर एक बंदे के पास एक बॉल है, you're going to throw it away ना, आप उसको ऊपर फेंकते हो फुल फोर्स के साथ, वो ऊपर जाती है.
जाती है जाती है जाती है जाती है, लेकिन एक पॉइंट आता है वो एक जगह पे आके रुकती है, जीरो वेलोसिटी पे, एंड आफ्टर दैट उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता होता है, एट द एंड वो जमीन पे गिर जाती है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को एक इंसान की जिंदगी के साथ जोड़े, एक इंसान कुछ नया सीखने की कोशिश करता है ना, तो वो उस बॉल की तरह उसकी लाइफ में वो ग्रोथ होती रहती है, होता रहता है, ग्रो करता रहता है, करता रहता है। लेकिन एक पॉइंट तक कभी कभार ऐसा जिंदगी में आता है कि शैतान बोलता है, ओ भाई नाउ यू आर फन्ने खान, जितना आपने सीखना था आपने सीख लिया, नाउ यू आर समथिंग, नाउ यू आर दिस, अब थोड़े शुष्की हो जाए ना। एट दैट पॉइंट उसकी लाइफ एक जगह पे आके रुकती है, और उसके बाद डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, एट द एंड पर गिर जाता है। सो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना बंदा, तो दिस इज द बेस्ट थिंग बट आई कैन से। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड मतलब आप अपनी इतनी फ्रीलांसिंग, मतलब इतनी चीजें करने के बाद आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? अगर मेरी समथिंग फैमिली आई वाले, स्ट्रगल विद। अगर मेरी फैमिली वाले देख लेंगे, दे वुड बी लाइक, भाई से वे बात ही कर रहे हैं। इट इज अ फैक्ट कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट यू नो आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड हेल्थ एज वेल एंड डिसिप्लिन इन माई लाइफ। तो अब थोड़ा बहुत टाइम निकालने का मैं थोड़ा बहुत कैपेबल हो गया हूँ ये खुद से। Yes. नहीं तो मतलब यू सेट टाइम्स कि इस टाइम, ये कभी कभार होता है ना, आई एम फ्रीलांसर एज वेल, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको खाना खाने का वक्त भी नहीं मिलता, लाइक योर फैमिली इज सिटिंग एट द डिनर टेबल एंड यू आर हियर अटेंडिंग अ मीटिंग एंड यू डोंट गेट टू लाइक इवन टॉक टू देम। इतना तो कभी नहीं हुआ, लेकिन यू नो ना इस तरह होना चाहिए इन फ्यूचर, क्योंकि आई फील हाँ, लाइक फ्रीलांसिंग एक आजादी है, सो इस स्लोगन को जो है ना बाकी में ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। सो फॉर मी इट इज नॉट ट्रू कि अगर लाइक ऐसा पूरा दिन हुआ है, नो, फॉर मी इट्स लाइक टाइम बहुत कम निकलता है, बट यू नो आई ट्राई टू मैनेज के फैमिली को लास्ट में टाइम दे, क्योंकि एक सोशल लाइफ भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी राइट नाउ मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, सो आई एम लाइक जस्ट फॉर फन एंड ऑल दैट, बट इन फ्यूचर आगे देखेंगे, बट राइट नाउ द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द फैमिली, सो डेफिनेटली फैमिली को टाइम देना चाहिए, बट आई थिंक। वेरी मच, दैट्स गुड। और फ्रेंड्स का क्या है, मतलब उनको पता है कि भाई इस बंदे के पास तो टाइम नहीं है, ये थोड़ा बिजी है, तो इससे थोड़ा दूर हट के ही रहना है, या व्हाट? No, क्या no, they're like I'm very chill with them, and they're like भाई तुम ये इंग्लिश हो गई और ये जितना भी फेक एक्सेंट है just go with like ऑनलाइन पढ़, लेकिन हमारे सामने you are supposed to be ओ क्या हाल चाल। So like I'm very chill. तो लाइक कभी उन्होंने बोला हो कि भाई हुजैफा हमें भी सिखा दो यार, फ्री में खुद तो करते रहते हो, हमें Yeah, भी कुछ कमाना I सिखा just दो। shared the thing of that. उसके उसके अलावा वो तो खैर कंटेंट राइटर था ना, मतलब फिर आप ही की फील्ड में आने की कोशिश कर रहा हो। नहीं लाइक को खास nobody was interested, क्योंकि उनको तो पढ़ना है ना, like they are दैट्स ट्रू। supposed। Okay, that's true. Yes, that's true. Acha, one more thing I wanted to ask is, जो आपका first client था, which you got from your own proposal or like from your own portfolio, what is the advice you would give to freelancers out there who are not getting their first clients? To be honest, I was like at that time मेरा को portfolio नहीं था. That was the first site that I was about to work on. उसमें मैंने हाथ किया था, which is a fact. ठीक है, और पता नहीं शायद लक से मिल गया था, क्योंकि I just posted in Facebook group और by mistake मैंने वहाँ पे नंबर दे दिया था. So बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया था, लेकिन एक वो बंदा था जिसने पैसे दिए और लाइक काम स्टार्ट किया उसके ऊपर. So it is like अगर आपने नया क्लाइंट लेना है, बहुत से लोग यार I don't recommend them for Instagram stuff. If अगर आपको काम चाहिए, you should go for freelancing websites, जो freelancing platforms है उनके ऊपर जाना चाहिए. You are not supposed to come on social media for getting clients, क्योंकि अगर client नहीं मिले किसी एक नए freelancer को, he would be getting disappointed और वो freelancing छोड़ देगा, क्योंकि social media से client बनाना easy game नहीं है. This is what I have experienced. Okay, I was saying कि do you think freelancing platforms पे अब client get करना इतना easy है क्या? इजी है, और बहुत से लोग ले रहे हैं अकाउंट, ठीक है, अब वो ऑर्डर्स ले रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर. और अब तो काफी नए प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं, वर्कजस्ट को देख लें, guru.com को देख लें, इज इंडीड अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ. You know, Indeed is a platform, and I like, it's a rhyme. Indeed like a great platform in itself. You know, उससे भी काफी लोगों को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, वहां पे भी प्रोजेक्ट विन कर रहे हैं लोग. So you तो think people are freelancing, not exploring enough? yes, exactly. They're not serving their time on freelancing platform, then they're getting disappointed, as I said. So थोड़ा सा time serve करना चाहिए. This is what I think.
Okay, that's great. Well, I think that would this would be enough to help any new freelancer to come into this field या start freelancing, especially in like कोई भी niche हो, अगर डिजिटल मार्केटिंग भी हो तो you think कि easy है उसमें मूव करना, उसमें आपको बस आपका पैशन होना चाहिए. अगेन द थिंग इज आपका पैशन होगा, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप उस करियर को आगे परस्यू कर पाओगे, आगे लेके चल पाओगे. वन मोर क्वेश्चन आई हैव इज के आपकी स्टडीज क्या आपके करियर से रिलेटेड आप कर रहे हैं, मतलब आपने क्या फील्ड चूज की है? I am studying ICS computer sciences in first year. ठीक है, और अभी just like एक महीने बाद बोर्ड के पेपर भी है, I have to work on them as well. थोड़ा बहुत पढ़ना भी है उसके लिए. थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. So yes, I think like I would be pursuing in software engineering, bachelor's in computer sciences after second year. Yeah, I guess like that would be a professional degree for my career as well if I would be going for software engineering. MashaAllah, chale, that's great. So with that all said, I think कि अगर people like 17 years old still studying, still giving time to their family can do something so big and start their career in freelancing, it should be much, much, much more easier than people who are in university, not just because of their age, but because of the exposure they have to the world and because of the people they have around them and more expert people around them and other people taking them more serious rather than us youngsters. तो आई थिंक कि अगर आप लोग हार्ड वर्क पुट करें और आप लोग सही मेहनत लगाए, अपना पैशन सही में आप लोग किसी चीज को अपना पैशन मानते हैं ना, ये नहीं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल आज मैंने हुजैफा का इंटरव्यू किया, ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो आपने बोला कि भाई हमें भी डिजिटल मार्केटर बनना है, कल मैं किसी कॉपी राइटर को उठा के ले आती हूँ तो आप लोग बोलोगे मुझे कॉपी राइटर बनना है. दिस यू शुड नॉट, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. ठीक है, you have to explore your own passion, you have to explore your own interest. And is there something you want to add to that as well, Huzaifah? No, I'm gonna just agree with all of the things you said. Yeah, I agree on this. Like एक बंदे का एक अपनी like choice होनी चाहिए, अपना passion होना चाहिए. It is okay to get inspired from someone's story, but you know आप बोलो कि भाई साहब अगर इसने किया so I'm gonna make it as well. No, if you would be capable of that, आप कर लोगे. लेकिन if you are not, then आप क्या करोगे? फॉर दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप किस चीज के कैपेबल हो, और वो आपको पता लगेगा अपने आप को आइडेंटिफाई करने से, अपने आप से खुद पूछने से. सो दिस इज व्हाट आई कैन ऐड. Exactly, that's true. That all said, I think सक्सेस स्टोरी किसी की भी हो सकती है एंड जरूरी नहीं है अगर आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं है तो आप कभी भी इन द फ्यूचर सक्सेसफुल ना हो. एक फेलियर आता है लाइफ में, दो फेलियर आते हैं, लेकिन देयर एक फेलियर आता है लाइफ में, दो फेलियर आते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ टाइम कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो. हुजैफा की स्टोरी में से भी यू कैन सी के ही स्टार्टेड विद लाइक स्टार्टेड एट इन वेरी अर्ली एज, और ऐसा नहीं था कि ही मतलब उनको क्लाइंट पे क्लाइंट आते रहे या ही गॉट सक्सेसफुल विद एवरी क्लाइंट. He lost, like, have you ever lost a client, like a good client? Yeah, a lot. So exactly, that's what I'm trying to And say. like I just wanted to add one thing over here. Like it's not a success story. I just don't wanted to mention any success story over here. It's not because like it is not a success story. It is like something Yes. I'm still studying. ठीक है, so it's not a success story. और कोई भी success story होती नहीं है, ठीक है. Everybody like जब तक लाइफ चल रही है bro, it is like going on, everybody is struggling for anything ना. So आपको सिर्फ अपने पैशन को उस चीज की तरफ डाइवर्ट करना है, आपने सिर्फ उस चीज से कुछ नया सीखना है. आपने यूं नहीं करना कि आपने बस उसी चीज के पीछे भागना है ना, आपने अपने पैशन के पीछे भागना है. दिस इज what it is. Yeah. And one more thing is people run behind money, which I don't think so कि अगर आपका कोई पैशन है, आपको कोई इंटरेस्ट है, तो आप उसमें मनी को प्रायोरिटाइज करो बजाय इसके कि आप उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो. आपको हर क्लाइंट आ रहा है, आप उसे मतलब बस सही है भाई मुझे क्लाइंट मिल रहा है मैं ले रहा हूँ. तो लाइक डू यू हैव दैट स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि भाई मुझे इस क्राइटेरिया के विद इन क्लाइंट चाहिए, या जो भी क्लाइंट आया आपने उसे ले लिया? नहीं एक्चुअली, बिकॉज लाइक काफी मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं लाइक उन्होंने बोला हुआ कि वो फर्स्ट से करेंगे लेकिन उनको देते देते 5 5. नो वरीज, देखिए पैसा आने जाने वाली चीज है. एंड यू नो मैं इस काम में आया था क्योंकि आई गॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट. मैं पैसे की वजह से लिटरली आई वाज नॉट इनटू ऑल दैट स्टफ फॉर पैसा एंड मनी, बिकॉज जरूरत ही नहीं थी. अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज पूरी हो रही थी. बट आई वाज लाइक यार इट इज सम फन ओवर हियर, ठीक है. बट जब मुझे पता लगा इस चीज का, मैंने कहा यार इट इज समथिंग heavy scene, so I have to get into it. Yes, तो बस फिर पैसा आना स्टार्ट होता है तो बंदा फिर बोलता है क्या ही बात है.
True. I mean, your passion, you're working in your passion and you're getting money. What could be better than that? One more Exactly. thing कि जो नए freelancers होते हैं, I think a major mistake, not a major mistake, लेकिन a mistake they make is कि जब भी client बोलते हैं ना, whenever they get like a client message कि I'm interested in your like services, वो उसी वक्त उस like client के लिए meeting के लिए available हो जाते हैं. Do you think Damn, that is no, a good आपको approach? थोड़ा एटीट्यूड शो कराना होता है यार, थोड़ा सा Exactly. Like एटीट्यूड. मतलब आप एटलीस्ट से टाइम दो, स्पेसिफिक टाइम दो, आप उसे बताओ कि आई एम अवेलेबल फ्रॉम दिस टू दिस टाइम. आपने हर एक क्लाइंट के लिए हमेशा हाजिर नहीं हो जाना, बिकॉज वंस आप क्लाइंट को अगर आदत पड़ गई ना उसकी कि आप हमेशा उसके लिए 24/7 अवेलेबल हो, फिर अगर फ्यूचर में आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ योर वर्कलोड, द क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन होती है वो थोड़ी गिर जाती है फ्यूचर में आकर. दैट्स व्हाट आई फील लाइक एंड दिस इज व्हाट आई That's हैव the fact, एक्सपीरियंस्ड माय actually. You throwing some facts, exactly. Yeah. सेल्फ. So again, thank you so much, Huzaifah, for coming here and doing an interview with us. And I hope a lot of people learn from you, and I hope a lot of people come into like a lot of people from Pakistan are involved in this career. And again, don't prioritize money here. मतलब अगर आप पैसे के लिए इस फील्ड में आते हो, I don't think so you can make a name in this field. पैसा आने जाने वाली चीज है. अगेन आई से दिस, मैं बहुत बार ये कह चुकी हूँ, लाइक पीपल मेरी लाइन ये सुन के थक गए होंगे कि पैसा आने जाने वाली चीज है, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो एक बार चला जाए ना वापस नहीं मिलता. तो दिस इज समथिंग you guys should always keep in mind. Is there anything Thank else you you so want to say much. out there and put out there? Again, I just wanted to agree on whatever you said, and thank you so much for having me over here. Once again, No thank you so problem. much. Watching Yeah, as well, thank who's watching. Thank you so much. you. Let's see who's watching. So anyways, thank you for your time, thank you for your knowledge, thank you for telling us a lot of stuff and a lot of insights being a freelancer yourself. So I hope you have a great journey and good luck for the future. Thank you Jazakallah. so much. Likewise. Bye bye. Take care. Okay, Allah Hafiz. Office.